Hello दोस्तों, so welcome to our final video in our series of NEET UG 2022 paper analysis. So हमने लास्ट दो वीडियोस में फिजिक्स और बायोलॉजी का डिस्कशन किया है, so naturally इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के साथ डील करने वाले हैं. Just as I had done for the previous two videos, I've done for chemistry in the sense that मैंने आपके सारे chemistry के chapters इधर list down किए हैं. So this slide that you can see here consists of your class 11 chapters. And I have listed down how many questions came from each chapter in chemistry. There were a total of 50 questions in chemistry, section A and section B milake. So as you can see, on an average you're getting 1 to 2 questions from every chapter in chemistry. So there are some chapters, most of the chapters you have gotten questions from. Only a few chapters are there जिससे इस साल कोई questions नहीं आए थे, which is hydrogen, redox and environmental chemistry. लेकिन ऐसा मत सोचिए कि these chapters are unimportant and questions don't come, because since 2022 में questions नहीं आया, it's highly probable कि next year मतलब आपके year में you can give 1 to 2 questions from these chapters. So don't leave these. And naturally there are some chapters जिधर से बहुत सारे questions आए हैं. For example, this year what stands out specifically is the 7th chapter equilibrium, जिधर से 5 questions आए हैं, which is 20 marks. So 20 marks from one chapter is a very big number. So please do not leave equilibrium, because we have also seen कि equilibrium से बहुत सारे questions आते हैं generally. Then moving on to GOC से भी 3 questions आए हैं आपके, which is a big number. And another chapter which is very important following the trends of the previous years, which we have seen, is chemical bonding and molecular structure. So this year we only had 2 questions. लेकिन इसके प्रीवियस वाले ईयर में मतलब 2021 में 4 क्वेश्चंस थे, 2020 में भी 3-4 क्वेश्चंस थे, एंड सिंस दिस ईयर मतलब 22 में केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस आए हैं. बहुत ही प्रोबेबल है कि आपके ईयर मतलब 23 में हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चंस आ जाए. इट्स क्वाइट प्रोबेबल. So my advice to you would be to not leave in physical, chemical bonding and equilibrium. तो बिल्कुल ही मत छोड़िए. और inorganic और organic try to complete as much as you can, because 11th का आपका inorganic और organic बहुत ही important है. Now moving on to your class 12 chemistry. इधर से बस there are very few chapters इधर से कोई questions नहीं आए थे, which was solutions in biomolecules. Biomolecules से generally you will only get 0 to 1 question. So if you wish you can leave that chapter, because ये ज़्यादा important है नहीं according to most of the trends. Solutions से generally you get 1 to 2 questions. इस साल कुछ नहीं आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साल में नहीं आएगा. So don't be fooled by that either. And naturally हर chapter से 1 से 2 questions आ रहे हैं, लेकिन there are of course a few chapters which are standing out to us, and I'll tell you what those chapters are. पहला वाला जो chapter है solid state, उससे बहुत सारे questions आ गए थे इस साल. Then again electrochemistry से you got 3 questions, and generally electrochemistry से a lot of questions do come in the previous year papers also. So electrochemistry ठीक से करके जाना. Then we have your organic part से हमारा alcohol, phenols, ethers and aldehyde, ketone, carboxylic acid, इन दोनों chapters को मिला के total 7 questions आए थे, which is a big number. So again in class 12, organic and inorganic is very important. ऑर्गेनिक से आप देख ही रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं. एंड एज फॉर इनऑर्गेनिक पार्ट, विच इज पी, DNF एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 22 में 2 क्वेश्चंस आए थे पर चैप्टर, लेकिन आपका जो ईयर है मतलब 23 के साल में ये प्रिडिक्शन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से यू मे गेट 4 to 5 क्वेश्चंस. बहुत ही बड़ा नंबर है. सो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. और फिजिकल से यू आर गेटिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू बी मोर सिलेक्टिव देन आई वुड से डू नॉट लीव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री and do not leave chemical kinetics. But of course you should try and finish everything, because at the end of the day this is a national exam, national level exam hai. It's a eliminative exam, so they will try their level best to eliminate you rather than select you. So आप जितना कर पाओगे chapters उतना ही आपका अच्छा है. But I have discussed the most high weighted segments and high weighted chapters in my earlier videos, so you can refer to that video for a more clarity and better understanding. I won't go into the depths of it in this video, because there's no point of repeating the same things again. Now coming back to our analysis of our 2022 paper, so I've divided the segments, मतलब organic, physical and inorganic में कितना आया था. So first of all I want to tell you that there is no predisposition of which one is going to come more, because generally 50 out of 50 questions the division is always going to be 16, 17, 17.
मतलब एकदम 33% का डिविजन ही रहता है बिटवीन ऑल 3 पार्ट्स। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई एक पार्ट ज़्यादा करके जाओगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा, ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ डू एवरीथिंग एज मच एज यू कैन। नाउ मूविंग ऑन टू कौन सा ईजी है और कौन सा हार्ड है। So your blue part indicates the easy questions, orange indicates moderate, and gray indicates the harder questions. Now these are of course subjective terms, but considering a more or less average student who gives NEET, the average NEET candidate, उसके हिसाब से ये moderate, easy और hard words have been described. So उसके हिसाब से physical chemistry has been quite easy this year. 65% was easy, 23% was moderate, and 12% of it was hard. Then आपका जो organic chemistry है वो ऑफ कोर्स फिजिकल से थोड़ा सा हार्ड रहा है। फॉर 50% ऑफ इट अराउंड वाज इजी, बाकी 35% मॉडरेट लेवल का था, एंड थोड़ा सा 18% अराउंड वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट वाज हार्ड लेवल, 20% अराउंड वाज हार्ड। देन वी मूविंग ऑन टू इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईजी वाज लेस एंड मॉडरेट लेवल वाज हायर। 50% वाज मॉडरेट, 11% वाज डिफिकल्ट, and moderate was 40%. Now inorganic was considered difficult simply because inorganic में बहुत सारा memorization रहता है and it's very NCERT line specific. That's why that is the reason why students find it a bit difficult. It's not really easy, but it's not really difficult either because it's not conceptual. Because inorganic chemistry in your NEET exam is completely NCERT based. So आप जितना अच्छे से NCERT कर पाओगे उतना ही आपका inorganic का questions मॉडरेट नहीं ईजी लगने लगेंगे. सो प्लीज़ डू NCERT इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली टू बी एबल टू शिफ्ट द कलर्स इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर टूवर्ड्स ब्लू. And organic chemistry, of course, I know all of you find organic chemistry difficult, but if you just concentrate on the concepts and try to solve more and more questions, you'll improve at it. And physical chemistry सबका easy ही लगता है, so I will not say much about that. So another important thing is that कि how much should you score in chemistry to be able to say that हाँ मैंने अच्छा score किया है and I can secure a seat for myself in medical. So the score is 150 up in 180, and this is not an impossible score. You can do it if you just focus properly on how to solve the questions. MCQ practice and properly following the NCERT is adequate if to score 150, and of course you have to be dedicated. I have discussed these things in my previous videos also, so you can refer to those to understand these things better, and I will of course help and motivate you in my further classes as well. So before we wrap up this video, I would like to clarify just a few more things. पहली बात तो ये है कि 11 और 12 में 50-50 डिवीजन रहने वाला है, मतलब 45% 55% ऐसा डिवीजन रहता है. सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक क्लास जिसको ज़्यादा आपको जोर देना है, बिकॉज नीट NTA इज़ वेरी स्मार्ट, दे गिव यू बोथ 11 एंड 12, और जो भी एक क्लास छोड़ के जाता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है. देन अगेन फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में इक्वल डिविजन्स रहते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. NCERT इज़ कंपल्सरी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस विद यू. NCERT इज़ से एकदम डायरेक्ट वन लाइनर्स आते हैं, विच इज़ वाई स्टूडेंट्स टेंड टू फाइंड इट अ लिटिल बिट more difficult. So if you want to make it easy for yourself, please completely do NCERT and solve NCERT based questions. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपके साथ हाई स्कोरिंग यूनिट्स डिटेल्स में डिस्कस किया है. इस वीडियो में मैंने छोटा करके बोल दिया है आपको, बट प्लीज़ रेफर टू माई प्रीवियस वीडियोज़ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. आई हैव डिवाइडेड दोज वीडियोज़ इंटू 2 फॉर class 11 topics and class 12 topics. These are 2 videos, so please go through those. You'll get a comprehensive idea of which are the most high weighted chapters in all 3 subjects, which is chemistry and bio. Last but not the least, if you have any questions or doubts related to this video, or anything to ask unrelated to this video but related to NEET, then let us know in the comment section below, because it will help us address your questions in a more streamlined fashion. That's it for today. I hope you found this video useful. Happy studying and good luck.